willing to take those reforms, undertake those reforms, because short-term pressures are too high, and very often the short-term pressures come from trying to meet IMF targets. Because, as I said, much of the period's been spent under IMF programs. So it's either that or it's political pressures, but we haven't got around to medium and longer-term reforms. And I'll stop this subject on that note, that as we go forward, the short term and the medium and the longer term have to be addressed harmoniously. I think that's what Mr. Tareen said, that it is the intention to go forward that way. So returning to my subject, so foreign currency debt. और अक्टूबर में 100 आ गया, ये एक महीना पुरानी आपको दिखा रिसर्च जो है मशीनरी होती है, कारोबार होता है, तो नंबर था वो 870 मिलियन अब 4 ये 8.9 ट्रिलियन का जो है और 15 $8 है, $1 और इसका प्रॉब्लम ही यही है कि हुकूमत को डॉलर है, इसमें 6 हमने रिजर्व बढ़ा दिए कि उससे सारा हुआ है, उसका प्राइस का भी और एक्सचेंज रेट है 230 है, कुछ कंपनी से He must hit the ground running और उसके बीच में हम वो प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। हम पहले ये जो हम खड्डे में जा चुके हैं, हमने खड्डे से कैसे निकलना है और फिर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेके हमने करनी है, जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपने पांव पे खड़ी हों और किसी से उनको मांगने की जरूरत ना हो। बहुत शुक्रिया। He don't need also any introduction. Mr. Salif Saab, thank you. तर्जुमा मैं उर्दू में कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, तो बेहतर है कि मैं अंग्रेजी में कहूँ, so that I know exactly what it is that I'm referring to. Prices.
3 years from now. That's what the approach should be. It's also unfair to look at one particular creditor to support you, because effectively you're asking him to subsidize the people whose debt you are not restructuring. So you transfer the burden from you because you send that money on to another creditor who's not restructured. So it's fair that we look at involve everyone, and it's reasonable that we think of one substantial restructuring, not little piecemeal restructuring. So, you know, that was the issue on external debt. If we don't, I'm sure they are thinking about it in Islamabad, but if it's not well launched in the next couple of months. By the way, after after the G20, after the suspension, this debt servicing suspensive initiative, the DSSI, after it finished last year, the G20 came up with another program. It's called the Common Framework for Debt Treatment, anticipating the problems emerging markets are going to have for all the reasons that I mentioned. They have opened a forum that is going to look at debt restructuring preemptively. Countries can apply, they'll take a look, and if they think restructuring is right, due, they will set up a creditor committee within 6 weeks to take matters further. It's not moving very fast, this program, but I just want to point out that the advanced world has accepted that there is going to be a measure of strain, and it's better that the debt problem be handled preemptively rather than wait for defaults like in the 1980s or like in the Asian crisis, which then feed on themselves and make matters much worse. So those are my comments on foreign debt. On domestic debt, which is also a big strain and is squeezing resources out of our economy. Let me start with the banking sector, because that will take us on to government debt and show the is having on the rest of the economy, the crowding out effect on the rest of the economy. Our banking sector is small, and there are lots of reasons for that. I won't bore you with them, but because the banking sector is small, we have one of the lowest private sector credit to GDP ratios, around 17-18% is what it is and what's it been. I mean, that's not adequate for 220 million people. That's not adequate for an economy that would aim to grow 7% or 6%, 7% like our neighbors are. So, one reason why our advances are low is because the banking sector is small. The other is because the giant appetite. This is what's happened to advances to deposits of banks. The SME sector, you measured it on the right hand side. The SME sector once took about 18 or 19% of total credit, fell down to 5 about by 2 or 3 trillion. So we have to squeeze this as well, and both these things together, government borrowing outside banks and a reduction of cash outside banks, will then give the banks the horsepower. They'll have to lend. They'll have to go back to the SME. Where else will they lend?
if the expansion of the balance sheet exceeds, if government starts borrowing outside and the expansion in their balance sheet exceeds the needs of the large corporate sector where the banks focus their debt, their lending now. Well, I won't go through these one by one in the interest of time. The wider distribution of, first of all, the government security profile has to be put into proper shape. We have a debt management office, but we need an empowered, centralized debt management office with support from market operators. We need people with market experience running this. We need objectives for for how they're going to diversify debt, for how they're going to lower the long-term cost of debt. And we need very badly to create a yield curve. Now, I don't want to go into detail, but a yield curve simply means the government borrowing at 3, 5, 7-year maturities in such quantities that trading in those government securities, because the government is borrowing so much in those categories, instead of borrowing 30 and 90-day treasury bills, because it's borrowing so much, people will invest in that paper, trade in that paper. What you'll get is a liquid market, and that that the rate that 3-year paper trades at then is fixed. You have a benchmark, or you have a similarly for 5 years, similarly for 7 years, and therefore what the private sector can then do is issue fixed rate bonds, which in this market is absent. Our private sector shouldn't be, our big companies shouldn't be borrowing from banks. It's cheaper to borrow from the bond markets. In America, the bond market is about 4 times the size of corporate debt of banks. But our bond market is barely developed, and one of the biggest reasons for that is the absence of this yield curve. Anyway, those are the responsibilities of the debt manager. We expand mutual funds, add non-banks and stock exchange custody and clearing institutions, add them to your primary distributor list. So your primary distributors are not just 6 big banks, but a lot of market players. So you widen your distribution pool, introduce a digital web for retail investors. You know, banks give you whatever they pay you on your savings account, they earn 1.5%, 2% more on treasury bills. So why can't a small savings investor buy the treasury bill himself? And if you have a digital web portal, then anyone with 10,000, 20,000, 30,000 rupees can go and buy a treasury bill or buy a bit of a treasury bill. Treasury bills should also be fragmented once retail investors come in a big way. Greater access of foreign investors, not today, today we may not be attractive, but it can all change in a year and a half. Use global clearing systems, increase trading on the stock exchange itself, identify new assets for sukuk issues. The reason our sukuk issue is muted is because the governments had problems identifying assets. They exist. They usually need some clearing up on title, etc., which should be done, and then we should consider asset-light sukuks. For example, commodity financing. Asset-light means it's not a building, it's not a railway track, but it's a crop, which will disappear in 6 months' time. However, the crop produces cash flow. So you can do a lot of short-term financing for sukuks if you can get the right framework to issue asset-light sukuks. Tax is, I won't talk about it, let's take it for granted, we need to make these tax efficient. Reduce high level of central bank SMOs, OMOs and open market operations. These are injections that I'm referring to that the State Bank carries out. The State Bank buys treasury bills from banks, gives them fresh money, gives them money, with which, now the old treasury bill is a repo. So the bill they bought hasn't been sold to them, it's been repoed. So it's still owned by the bank. Now with the money you've given the bank, you sell them a fresh government treasury bill. That money government's account into the ministry. This is government by the State Bank indirectly as opposed to directly, primarily. But it's gone up a trillion. It's 25% of our deposits.
60% of our loans. It's far too much. So the first success with more treasury bills should be to run this SMO figure down from 5.2 really under 1 over a long period of time, 1-2 trillion in the short term. Only taken, again in the interest of time, I've only taken one strategy for one of the most important reasons people hold cash. There's an informal market where, that is not unrecorded market where cash is obviously the way to trade, not through bank accounts that gets you into the recorded market. But the other important reason people hold cash is the transactional need. 96% of our transactions, our retail transactions are still cash. And this is, it's very significantly higher than anywhere else. So, if we can get, we've got about 3.5 million vendors of all types, from supermarkets to small karyana stores. If we can persuade all of them to work on a QR code basis, then the buyer doesn't need to hold cash. Then if he gets his salary, he puts it into a bank account, he doesn't keep it at home. I'm talking about people earning 60, 70, 40,000 rupees a month. And all that cash then transfers to the banking system. Collectively, that would be a huge amount. Exemption of duties on digitization of fees, digitization of government revenue and government receipts and payment. This is already, the system has been prepared. I don't know the reason for the delay. It was sitting with the AGPR, the Accountant General, Pakistan Revenues, but the system is ready to work between the State Bank and the government. The technology has been established and all the banks. It's just up to the government to give its green light. Now this will deal with a lot, this will eliminate a lot of the cash if the government receives and pays digitally, because a lot of government payments are still in cash. CDNS, digitized CDNS, this is the National Savings Schemes. So foreign debt, domestic debt, getting the banks, enabling the banks to lend more through reducing the role of government and banks' balance sheet. This is the last slide I have. Development finance, as you saw, lending to the SMEs is only 6% of private sector lending by banks, and agriculture is the same, it's about 6%. Now, these sectors are the biggest employers in the country. They have the most potential to grow, and they are really, by and large, on the fringes of formal finance. So we need to get institutions that focus on them. If you look at the largest countries in Asia, the largest economies, you look at Japan, you look at South Korea, China, India, in their development stage, they built the middle of the economy through public sector development banks. Now they don't have to be public sector, but in their case they were public sector, who devoted to these things that I've put SMEs agriculture. And by the way, it's not just money, it's also advisory services. It's also helping them build supply chains. It's also to agriculture supplying machinery, decent tractors to them, or supplying them with cold chains and supplying them with warehousing. That's what these development banks do. Now, how can we suddenly create a big development banking sector? We have let the development banks we have die. There was Speaking IDBP, there was Bankers Equity, NDFC, RDFC, Housing Bank. They've all sort of fallen by the wayside. So how do we today get a full-blown development banking sector? Do we force our banks to do it? Do we go India's way and impose directed lending rules so that 40% of bank lending is in these sectors? Not the ideal way to go about it. So I'm not sure how we do this. Just some thoughts. We can convert our provincial banks. So that's Khyber Bank, Sindh Bank, Bank of Punjab, into
provincial development banks, and they stop all other business, and they deal with these subjects in provinces. One possibility, and there's one apex bank on top of them that's keeping sight. That's one possibility. I'm not saying it's the right one, but I just suggest it's one. We've got 6 development finance institutions, a lot of money, but not really lending, much of that cash sitting in treasury bills and PIVs. Convert the 6 into a single institution. With the support, each has a joint venture partner. There's a country in each, one of them that Pakistan is partnered with. So with their support, and you can allow each development bank to choose the sector it wishes to engage in. You know, for someone it could be infrastructure, for someone it could be agriculture, for someone SME. So they have that option. That's one possibility. Or you just impose development financing on the big state-owned banks. So again, National Bank, Bank of Punjab become pure development banks and nothing else. The important, you see, we can't blame our private sector banks too much. Everywhere in the world, the private sector banks lend short term. They provide working capital to SMEs, not capital for expansion, not capital for machinery, not capital for infrastructure. They don't do that. Now, what's happened elsewhere, these strong development banks from the public sector have made these SMEs so creditworthy that they've crowded in the commercial banks, the private sector. And that's what can happen here. If you're complaining about commercial banks, if you had a strong development banking function going, you'd find commercial banks really charging into this field. Anyway, I'll leave it there. I'm sorry I probably overshot. Mr. Tareen has looked at his watch 3 times, and I know if he does it once again, there'll be violence. So, with your permission, thank you very much. Thank you very much, Salim Raza Saab. In the interest of time, we are already behind 15 minutes, so I'm going to quickly invite Mr. Asif Qureshi. He is the co-founder and CEO of Optimus Capital. So, and he has a 26 years of experience. He is a financial market guru, and he'll be talking on energy. Asif Qureshi Saab. Thank you. You have to again. Sorry. Yes, assalamu alaikum everyone. Since I have just about 10 minutes to complete this presentation, I'll try to be as quick as possible. This is one slide which sort of summarizes the crushing weight that the economy is facing because of the energy sector. $26 billion of energy import in 2022, which comprises about 49% of the total primary energy supply of the country. 1,070 billion rupees paid out to the power sector as fiscal support. Cumulatively, about 4.8 trillion rupees paid in since 2007, when the problem of circular debt in the power sector first emerged. 2.3 trillion outstanding power sector circular debt, about 720 billion rupees of gas sector circular debt, 25 billion units of electricity which are lost in T&D, about 300 MMCFD of natural gas which is wasted as UFG. So this is sort of the scorecard or the medical record of the health of the energy sector and the challenges it poses to the broader economy. We are facing an increasing reliance of energy imports. As you can see from the chart, it used to be about less than 30% 15 years ago. It's gone up to about 50% already, and this trend is increasing. Last year, total energy imports were $26 billion, comprising $18.3 billion of oil import, $5 billion energy, LNG, and $2.7 billion worth of coal imports. So these numbers are clearly not sustainable. And one of the reasons why you're facing rising energy imports is because the local production of oil and gas has been declining. Since peaking 10 years ago in 2012 at about 4.4 billion cubic feet per day, gas production is down to about 3,400 billion cubic feet per day. Oil production peaked a couple of years ago. It's down significantly from the peak levels, about 95,000 barrels per day. And these are not encouraging trends for the energy sector in general and for the broad economy in particular. Power sector
is by far the biggest drain on the economy. Like I said before, we've invested about 4.8 trillion rupees cumulatively in shape of budgetary support. In the power sector, we still have an outstanding stock of circular debt of about 2.3 trillion rupees as of June 2022. And if you include the cost of budgetary support, obviously the government had to borrow to inject that money into the power sector. At 8%, that comes out about another 2.3 trillion rupees. So cumulatively till June 2022, this sector has already cost 9.5 trillion rupees, and the recent numbers, if you take those into account, it would be in excess of 10 trillion rupees. So just imagine the kind of drag that this sector has had on the broader economy if the same resource had been spent elsewhere, the healthcare, education, infrastructure, economy would have been in a much better situation. Disco's inefficiencies cost about 800 billion rupees last year. The left graph actually shows excess T&D losses in excess of 10%. I've used a 10% benchmark because the efficient discos are generally below that 10% mark. And you can identify the more problem discos and how they compare with the other ones. So 10.6 billion units of excess T&D losses that we faced last year. If you multiply that by the average cost of generation for last year, that works out to about 170 billion rupees. Another 230 billion rupees lost in shape of under collection of billing. So whatever amounts that you're billing, you're not getting 100% payments from the customers. So collectively, 400 billion rupees lost there. Obviously, everybody's been complaining about the rising cost of power generation. And if you look at the trend in the initial years, over the last 10 years or so, we faced the problem of rising capacity payments. But in 2022, the trend actually changed because of the shooting up of international energy prices. The energy component of tariff has gone up dramatically. So certain things which you can control, but the other factors which are beyond the control of any government. And you know, it's not just a situation which is unique to Pakistan. All the developing countries, even the developed countries, are facing a similar situation of rising cost of power generation. When we have this absurdly cheap gas in Pakistan, and which is actually encouraging its wasteful or rewarding wasteful consumption across all sectors of the economy. The biggest waste has actually been the residential sector, and that is actually reflected in the graph on the right hand side. If you work out the average cooking load of the economy, the amount of gas that you require, so per household that would be about 35 cubic feet. So you multiply by that by about 11.5 million subscribers, that works out about 450 million cubic feet per day. But the domestic sector is actually getting, during the summer months, about 650 million cubic feet per day. There's a lot of households which are leaving their gas geysers running because the gas is so cheap. So we have to, so there's about 200 MCFD, billion cubic feet of gas that we are supplying on top of the basic requirement of cooking for every household. That's a huge number in terms of the economic waste that we are facing there. Then we have these, you know, varied tariffs across different sectors. We have general industry tariff in the south of about $4.7 per million BTU. Export industry in the south is getting 3.7. Export industry in Punjab is getting $9. Imported RLNG, its cost in its tariff in the last month was about $13.4. So you have to benchmark the cost, the tariffs that we have for different categories versus its substitute, which is imported LNG. So you can see by the difference between the bars as they compare with the RLNG bar, how much subsidy is being provided to these sectors. And these are not sustainable numbers. Energy infrastructure requires huge investment for modernizing it. Most oil refineries in Pakistan, although they name plate capacities in excess of 20 billion tons, they produce about 12 million tons or so. They're based on old technology, which is hydroskimming, which results in production of large amounts of low distillates, for example, furnace oil. In case of Pakistan, it's about 20-odd%. So we end up with a surplus furnace oil because it's being substituted in the power sector by cheaper sources of power generation. Then we have 70% of oil transportation taking place by road, which is not just a safety risk, but a lot of fuel is actually consumed in transporting fuel. So that's a waste as well.
And in case of Karachi, we even we supply water to households using oil tankers as well, water tankers as well. So a lot of diesel is actually consumed in supplying water to households as well. Port infrastructure for oil import requires upgradation. Oil piers are not really in the best of health. We can't bring in large oil carriers because we don't have, our ports are not equipped to handle them, and those carriers will have much lower transportation costs. We don't have land-based LNG terminals, which we need, land-based storage for LNG, and that is the reason why we face these problems of certain shortages and surpluses in certain months of the year when it comes to LNG. We don't have, although we've been talking about it for the last 30, 40 years, no strategic petroleum reserves, which the country desperately needs. So those were the sort of a summary of the problems. We just proposed a 5-pronged strategy for restoring the viability or sustainability of the energy sector: restructuring, rationalization, indigenization, privatization, and electrification. So I'll take them on one by one very quickly. Restructuring of legal, regulatory, and governance. In fact, the entire institutional framework of the energy sector, which has not worked for the last 30 years, needs to be overhauled entirely. We have 2 divisions, petroleum division, power division within the Ministry of Energy, but virtually they're operating as 2 independent competing ministries. Power Ministry is complaining to the petroleum division that you're not supplying it enough quantities of LNG. Petroleum division is complaining to the power sector, you're not lifting furnace oil, so the refineries are shutting down. So they're always fighting, writing letters to each other, and not working in coordination as a single ministry. So they need to be merged together, assimilated, integrated with one minister, one secretary of petroleum. Unification of regulators likewise is needed. Right now, I don't think that these regulators talk to each other, very frequently or at all. We need to appoint regulatory board members. Right now, we have provincial representatives. We need to replace them with functional roles. People who are qualified in the respective areas in technical, finance and other related fields relating to energy to be appointed on those board members. As board members, market-based compensation for all staff, capacity building across the board along the entire institutional chain, overarching national energy policy rather than having these bits and pieces of different policies for each individual segment of the energy chain, which don't hang together as one policy. We need one national energy policy, which should be overarching, and then we have these subcomponents. We need to have a roadmap for deregulation as well. National rationalization of energy prices, I've labored that point before. We require a major immediate increase in natural gas prices if the sector has to remain solvent. There are massive amounts of receivables which are building up in the gas sector, which are affecting your exploration activities as well. Unified framework of pricing so that all energy substitutes are actually priced based on their heating value while accounting for the pollution effect of different fuels by levying certain carbon taxes on those fuels. Then we need to remove cross subsidies. One category of consumer is subsidizing the other category. That needs to be removed. The government must have direct or targeted subsidies in place. We require comparative industrial tariffs so that a lot of the load which has shifted or which could potentially come back to the grid must be brought back. So a lot of this captive generation, if the industries are offered reliable and competitive electricity supply, this load will come back to the grid. Then we need to reduce the capacity purchase price, the CPP curve of the power sector by flattening out the biggest component of capacity payments, which is the debt servicing component. So we need to extend the debt tenors of these power debts. About 45% of total capacity payment actually is actually from the public sector, especially these large nuclear power plants and hydropower plants. So the charity begins at home. So the government must start by reprofiling its own public sector debts before it moves down to the private IPPs. The indigenization of energy, I don't think that this point could be overemphasized. In the oil and gas sector, there are a lot of, in fact, there's one representative of Sui South here. I was talking to their MD. What they have done very wisely is that they've reached out to some of the E&P companies who have plugged some gas production because
the field economics was not making sense, because as the field ages, you have more impurities in the field. The gas quality is no longer pipeline quality, and they need to invest a lot more just to ensure that energy can be supplied or put into the power system. So we need to enable production from existing non-producing gas fields by offering them lucrative prices or bilaterally negotiated rates. We need to encourage upstream activities, address the key issues, which is security, simplifying the approval process. There are a lot of red tape in getting the approvals from the government, and we need to offer better valid pricing, not just for conventional gas, but also for tight gas. Likewise, we need to expand the new frontier we formed in shape of thermal coal, use thermal coal for substitution of imported coal by blending it in existing power plants and existing cement plants, carry out feasibility of using that coal for gasification purposes. Then we have massive, you're already aware of this, hydroelectric potential, wind potential, and solar energy potential. So this is the next, obviously, prioritization, in my view, is a must for efficiency and investment. Two factors which are the biggest contributor to circular debt are higher T&D losses, excessive T&D losses of distribution companies, and under collection of billing, which account for about 400 billion a year. As per IEA, we require nearly twice as much investment in the T&D sector of the next 10 years than we did in the last 10 years. So all these things, operational efficiency improvements, massive investment which are required in the T&D sector, cannot be done while these companies stay in the public sector. So we need to privatize them, bring in financially sound investors, and ensure that they are supported by strong operators. And I've presented here as a chart. A lot of people talk about, what will privatization do or bring it to efficiency of these companies. K Electric is a case in point. Over the last 10, 15 years, they have brought down, since privatization, their T&D losses from about 35% to just 15% this last year. This is the last slide, electrification of energy use. As they say, the new cliche is electricity is the new oil. So the conventional boundaries of different fuels being used, petrol being used only for transportation, gas being used for space heating, for water heating, a lot of these boundaries are now getting blurred, and there is the convergence of energy use taking place with a more prominent role of electricity. 20 years ago, we would make tea on a gas stove, warm up food on gas stove as well, but we do that using microwaves and electric kettles now. So then we need to consider electrification public transport. China in Shenzhen city was the first one to have 100% electric public transport in terms of buses and taxis. Then solarization of tube wells. This can resolve Quetta electricity supply company's problem as well. 75% of electricity sold in Balochistan is actually going into tube wells because the water levels are declining by the year. So the key use of electricity there is for running tube wells, for irrigation, for water supply. So if we can resolve that issue, either by supplying water to that province or by solarizing their tube wells, it can help in resolving this problem as well. And for last but not least, solar geysers. Your gas consumption actually increases many times once you start running your gas geysers. If you can replace them with solar geysers, that will help a lot. So with that, I'll conclude. I hope I've done that in time. Thank you very much. Electricity is the new oil. Thank you very much, Asif Qureshi. Now we have participants. They are going to join us from the Zoom link. Mr. Jamshed from PTI, and he's going to talk on agriculture. So, Mr. Jamshed, you're ready to speak now. जमशेद साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज. जमशेद साहब
रही आवाज? Can you hear me? Hello? Can you hear me now? Hello? 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 Can you hear me now? Hello? Hello? जमशेद साहब आप बोलें, शुरू करें बोलना। जमशेद साहब आप अनम्यूट कर दें अपने आप को, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अनम्यूट करें अपने आप को। जी, हेलो हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? आज ही आ रही। कैन यू हेयर मी? हेलो जी जमशेद साहब आप बात करें शुरू प्लीज। जी, मैं कह रहा था कि इसमें यू कैन से कि इसमें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बड़ा मेजर रोल है इसका। और चौथी चीज जो है कि ये फूड फीड एंड फाइबर जी नेक्स्ट। और नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें दो केस स्टडीज हैं बड़े सादा से, ये थोड़ा सा फोकस करें कि पिछली गवर्नमेंट जो आई के गवर्नमेंट थी, आई के गवर्नमेंट में लास्ट 2 ईयर जब फूड महंगी हुई है तो वर्ल्ड में सारे मुल्कों ने परफॉर्म करने की कोशिश की। तो ये 5-6 जो बड़ी फसलें हैं बल्कि 7, इसमें अगर देखें तो 2 साल का, चूंकि एक हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट होता है, लिहाजा हमने 2 साल का डाटा ले लिया। 2 साल का जो डाटा इसने मुजम्मल नेक्स्ट पे जाएं, मुजम्मल नेक्स्ट साइड पे जाएं। इसको ये अगर देखें कि इसमें 2 साल के डाटा में जो वर्ल्ड की ग्रोथ है वो आप और पाकिस्तान की ग्रोथ, तो तमाम फसलों में कोई 5, 7, 8, 9 ग्रोथ हमारे यहाँ ज्यादा है। ये केस स्टडी है कि ये जो स्टैग्नेंट ग्रोथ थी पाकिस्तान में ज़राअत की कई साल रही, लेकिन यहाँ आप देखें तो 2 साल में आप यू कैन से कि आप बिल्कुल मोजे कर सकते हैं और हमने किए हैं। जी नेक्स्ट कर दें। और दूसरा, अभी इस गवर्नमेंट के आने के बाद जब फार्मर को सपोर्ट खत्म हुई है तो पीडीएम में अगर किसान पैकेज आया है तो सपोर्ट जब खत्म हुई है और इनपुट्स महंगे हुए हैं तो उसका रिजल्ट ये आया है कि ट्रैक्टर की 36%, डीएपी की 41%, यूरिया 9%, पोटाश एंड डीजल। देखें ये रबी खरीफ क्रॉप में जो आपकी नॉर्मली कैश क्रॉप्स हैं जिन्होंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देने हैं या इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल है, वो सारी क्रॉप्स में आपकी ये नीचे चली गई है ग्रोथ। आप कह लें कि प्रोडक्शन एक ही साल में या 6 महीने के अंदर अंदर जो वर्ल्ड में ज्यादा ग्रोथ कर रही थी उसकी निस्बत सारी की सारी रिवर्स हो गई है। इसमें यूजेज रिवर्स हुआ है जी। नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट। अब उसका नतीजा ये जब इनपुट लो हुआ है, इनपुट का यूजेज लो हुआ है, तो अब एफसीए मीन के यू कैन से कि फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जो लेटेस्ट डाटा है कि ये हमारे एस्टिमेट्स है पैदावार के, उसमें कॉटन 35% कम आ रही है, मेज 3% है, शुगर केन 8% है, राइस 35%, मूंग 30% और चिली 7%। इसी तरह वेजिटेबल है। जो 2 सालों में 2600 अरब रुपए की इनकम बढ़ी थी किसान की, हम समझ रहे हैं कि इस साल में कोई 1000 अरब रुपए की इनकम दोबारा कम हो जाएगी। नेक्स्ट। अब चैलेंज इसमें यह है कि हमें जो फार्मर है, नॉर्मली अनपढ़ लोग हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को हर वक्त सपोर्ट की जरूरत है। इनके साथ कम्युनिकेशन में रहना, इनको आप पहले कॉस्ट प्रोडक्शन कम करना, मोटिवेट करना और कंसिस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है।
मैं समझता हूँ कि हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ जो मेन एक्चुअल चैलेंज अगर देखें तो हम 2100 कैलोरीज खा रहे हैं पर कैपिटा पर डे, और वर्ल्ड एवरेज जो है वो 2900 है। सेकेंडली एक हमारी को 4.8 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ती है। सो दोनों चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अगले 7 साल में अगर देखें तो हमें 70%, और तीसरी बात इम्पोर्ट, सेल्फ रिलायंस के लिए या सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें 70% अगर प्रोडक्शन बढ़ाएं 7 ईयर में तो फिर बात बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कंफर्टेबली हम 5 to 6% GDP ग्रोथ कर सकते हैं ज़राअत में, और उसका तरीक़ेकार ये होगा कि लो कास्ट प्रोडक्शन, मोटिवेशन और परमानेंट गाइडेंस। दूसरा ये कि लो वैल्यू क्रॉप से, जो हमारे पास लेबर्स काफ़ी है, लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाएं। और तीसरा ये कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट हमें क्रॉप्स में और एनिमल में करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्ट हम बहुत महंगी कर रहे हैं, और आगे इस तरह हमारे पास डॉलर नहीं है, हम अपने आप को स्टारवेशन से नहीं बचा सकते जब तक उसमें हम आप कहने की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते। फार्मर मंडी का कंसेप्ट बड़ा शानदार, का प्लान था इसका, से वेदर लंबा है, ऑलमोस्ट 8 महीने का है। 8 महीने का जो हॉट वेदर है, ये नंबर ऑफ क्रॉप्स हमारे यहाँ ज्यादा कर सकता है, और जिन क्रॉप्स को ठंड ज्यादा चाहिए वो क्रॉप्स हमारे यहाँ पैदावार थोड़ी देती है। गंदम है या आलू है, ये पैदावार थोड़ी देते हैं, स्पेशली गंदम एक हमारा वीक और एप्पल फूड ये है। सो हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट जब हम किस चीज में कैलोरी कितनी है, प्रोटीन कितने और फैट कितने हैं, तो डाइटरी इंडेक्स आ रहा है मुझे का महंगाई का। अच्छा, तो महंगाई का जो नजर आई एम रियली सॉरी, इनको म्यूट कर दूं। अब मैं जो है, वी हैव अ नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर असफर एहसन, एंड ही इज गोइंग टू टॉक ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ओवरऑल। तो असफर, ओवर टू यू। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. My today's topic is investment and business climate in Pakistan. शुरू में शौकत तरीन साहब और सलीम रजा साहब ने एक ओवरव्यू दिया है पूरी इकोनॉमी का, तो मैं उस डिटेल्स पे तो नहीं जाता। आई विल टेक ओनली 3-4 minutes एंड आई विल शेयर ओनली फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। हमारी जो FDI का इनफ्लो है पाकिस्तान में लास्ट फ्यू ईयर्स से वो अराउंड कोई $3 billion का है, इनफैक्ट लेस देन $3 billion। बट द रियलिटी इज कि पाकिस्तान में
इस वक्त जो पोटेंशियल है वो हर इंडस्ट्री में कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। इसी तरह से जब हमने लास्ट गवर्नमेंट में BOI की तरफ से बहुत सारी कंट्रीज के साथ काम किया और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस थे बेस्ड ऑन आवर मल्टीपल मीटिंग्स विद सेवरल इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट्स, तो हर कंट्री से जो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ हमने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया, स्टिल आई एम पर्सनली वर्किंग विद द सऊदी गवर्नमेंट ऑल्सो, कुवैत है, UAE है, चाइना है, नेदरलैंड्स हैं, बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं, 8-10 कंट्रीज थी जिस पे हमारा बहुत खास फोकस था। और अगर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसकी हमने जो बनाई थी और उसको अगर लॉन्ग टर्म पे फॉलो किया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हर कंट्री से कई बिलियन डॉलर्स का एनुअल आपका पोटेंशियल है। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज के जो कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स है, this is the biggest challenge. The continuation of policies is the biggest challenge. तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टर को कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए होती है, इन्वेस्टर को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, और इन्वेस्टर को एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जिसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, जिसमें रेगुलेटर्स भी हैं, जिसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंडस्ट्री के डिफरेंट रेगुलेटर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, वी आर नाउ इन नवंबर 2022 और फरवरी 2022 में आज से कोई 8-10 महीने पहले ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है OICCI, which is the most credible chamber in Pakistan and the oldest chamber in Pakistan. And there are 207 multinationals from 35 different sectors are the members of this chamber. ये हर 2 साल में एक investor confidence survey release करते हैं. And this is the most authentic survey in Pakistan because ये multinationals होती हैं, उनके numbers बड़े clear होते हैं और जो उसमें इंडिकेटर्स नजर आते हैं उसकी बेस पे वो सर्वे आता है, उन रिकमेंडेशंस देते हैं। तो फरवरी में मुझे याद है शौकत साहब मौजूद थे उस मीटिंग में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें OICCI की सारी मैनेजिंग कमेटी आई और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो अखबारात में पब्लिश हुई, आप सब ने उसको पढ़ा, उसको देखा। और जो लास्ट 2 ईयर्स का, मैं सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के सर्वे की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस सर्वे को देखें तो उसमें जो मेजॉरिटी इंडिकेटर्स थे वो सब पॉजिटिव थे। वो OICC के वेबसाइट पे गूगल आप करें, वो जो रिपोर्ट है वो मौजूद है और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई तो जो उनकी रिकमेंडेशंस थी उस पर उनकी इंस्ट्रक्शन मुताबिक सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, FBR ने, SECP ने, BOI ने और जो कंसर्न इदारे थे उन सब ने अपना काम शुरू किया। तो आज की अगर हम बात करें, इन लास्ट फ्यू मंथ्स, स्पेशली इन लास्ट फ्यू वीक्स, आई हैड डिस्कशन विद सेवरल इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान जिनके साथ हम मीटिंग्स करते थे ऑफिशियल लेवल पे। बहुत सारे मैं ग्लोबल CEOs को मैं मिला भी और उससे गुफ्तगू हुई इन लास्ट 1 मंथ, जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं। दे ऑल आर एक्चुअली वरीड एंड वरी इज नॉट रिलेटेड टू विद द फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो बट जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, बिकॉज के, और मेरा ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये मैं जो व्यूज शेयर कर रहा हूँ ये एज अ प्रोफेशनल शेयर कर रहा हूँ कि जो एक सिस्टम चल पड़ा था, जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हम जा रहे थे, उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। आई ज्वाइंड लास्ट ईयर एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, I worked only for 6 months and मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बता रहा हूँ। शौकत साहब को भी सारी चीज़ें पता हैं, मैं इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता था, मेरे उस्ताद भी हैं। बहुत सारी कंट्रीज से और बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हमारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव पेस पे चल रही थी और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। मुझे याद है खालिद मंसूर साहब भी होते थे जो CPEC को हेड करते थे, हम लोग बात करते थे कि यार शायद नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में हम ये इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स को मटेरियलाइज करेंगे और फिर ये प्रोसेस होगा जो चल पड़ेगा। सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ अगर मैं बात करूं, वी हैड 18 मीटिंग्स ड्यूरिंग माय 6 मंथ्स BOI टेन्योर, और जिसमें लास्ट मीटिंग मेरी उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली से हुई थी ताशकंद में।
दिस वॉज ओवर 2 hours मीटिंग. उनकी तरफ से 3 लोग थे, हमारी तरफ से 2 लोग थे. एंड हमने उसमें पूरी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई थी. 8 सेक्टर्स थे, वो सारे सेक्टर्स भी शौकत साहब को पता हैं. और उन सेक्टर्स में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे. कुछ G2G थे, कुछ G2B थे, कुछ B2B थे. और जो हमें पोटेंशियल नजर आता है उस पर मेरा एक आर्टिकल भी आया है. अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर में 24 अक्टूबर अभी जो गुजरी है उस पर आर्टिकल देखें. मैंने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और उसमें सऊदीया की केस स्टडी दी है पूरी. और ये सारी एजम्पशंस बेस्ड नहीं है, सारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर्स हैं, सारा कुछ है. तो ये एक पोटेंशियल हमारा था, हम इन तमाम चीज़ों को मटेरियलाइज कर रहे थे. And I had a meeting with the investment minister of Saudi Arabia 2 weeks back in Riyadh, and I had a meeting with the finance minister of Saudi Arabia also. So Saudi का जो investment minister है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का salesman कहता है अपने आप को. He is a very thorough gentleman. He was chairman of Aramco earlier, and बहुत सारी जो उसकी गुफ्तगू थी वो यही थी, जो continuation of policies और continuation of जो पूरा एक system चलता है. और उस पर इसका फेयर ये था कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही थी कि वो कुछ इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज के किसी लोकल इन्वेस्टर को या किसी फॉरेन इन्वेस्टर को जो चीज़ चाहिए वो एक क्लैरिटी चाहिए. आज डॉलर का रेट सेट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा. मैं कराची में कुछ बिजनेसमैन को बैठा हुआ बात कर रहा था, ये डे बिफोर यस्टरडे की बात है, एंड ऑल वर इंडस्ट्री कैप्टन्स. But overall sentiment is very negative. So my 3 or 4 points are: we need political stability in this country. Under current scenario, जिधर हम खड़े हैं इस वक्त November 22 है, I think आज 22, और next 3 to 4 months में, ideally अगर February, March में, we should go for the elections. And again, this is not a political statement. This is what I believe as a professional. I'm also doing business. I'm interacting with whole Pakistan, all the top CEOs, all the top business leaders in this country, all the major foreign investors outside Pakistan. What we need is free and fair elections in this country. Because मेरा एक बहुत fair assessment है, ये मेरी बड़ी critical evaluation है कि till August September तक हम wait नहीं कर सकते, ये country wait नहीं कर सकती. तो सारे स्टेक होल्डर्स जो इस कंट्री के हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, सबको एक पेज पर होना चाहिए और इस मुल्क के लिए होना चाहिए. पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इस मुल्क के लिए आपको बैठना चाहिए कि फरवरी मार्च में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने चाहिए. उसमें फिर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आप एक्सेप्ट करें, 5 साल का टाइम दें. ये जो 3-3 साल में आप गवर्नमेंट को हिला देते हैं ना, ये चीज़ कभी भी इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जाएगी. और जो एक और पॉइंट है वो ये कि सारी चीज़ों को एक तरफ रख के जो इकोनॉमी है आपकी, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उसमें आपको जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को चाहिए, चाहे वो अगेन लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, उसके लिए आपको वो मेजर्स लेने, वो आपको इकदाम करने. पॉलिटिक्स आपकी होती रहेगी, पॉलिटिक्स आपकी चलती रहेगी, लेकिन खुदारा इसके लिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि वी शुड गो फॉर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और उसके बाद जब तक ये सिलसिला 5 साल का फिर शुरू नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत तकलीफ से, बट अगेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 7, 8, 9 मंथ्स आपको मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं देखेंगे. और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स पे अगर आप देखें तो कोई बहुत काबिल ज़िक्र कोई चीज़ नज़र नहीं आती. लोग फेयर में हैं, लोग क्लैरिटी नहीं है, और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पास आज टाइम है, हम बड़ी बात करते हैं कि हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारा बड़ा पोटेंशियल है, हर इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, हर चीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन आप यकीन जाने दुनिया जिस स्पीड पे चल रही है, हमारे पास आई थिंक ये कुछ साल हैं. अगर हमने अपना किबला काबा सही नहीं किया, अगर हमने एक सही स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे काम नहीं किया, पाकिस्तान दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर सकेगा. दुनिया में छोटी छोटी कंट्रीज में, उज़्बेकिस्तान गया हुआ था,
और बड़ी अच्छी हमारी रिलेशनशिप थी उज़्बेकिस्तान के साथ। हमारा उनके प्रेसिडेंट आए थे अपना पूरा डेलीगेशन लेके, फिर उसके बाद एक ऑफिशियल विजिट पे मैं भी गया था। मैं भी कुछ उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ और हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं। मैं भी कुछ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। लेकिन जो एक छोटी सी कंट्री उज़्बेकिस्तान है, अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, उसको स्टडी करें, जो लास्ट 3-4 ईयर्स में वहाँ पे चेंज आया है, जिस डायरेक्शन पे इस वक्त वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग करते हैं, हमें उन खतूत पे चलना होगा। और इसके लिए आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री चाहिए। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं। अदरवाइज लिप सर्विस से आप 6 महीने, 10 महीने, साल गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। बट हमें अगर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए देखना है, इस मुल्क का फ्यूचर देखना है, तो हमें इकोनॉमिक रोड मैप के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए एक पेज पर आना होगा और उसमें हमें पॉलिटिक्स को साइड पर रखना होगा। So this is my concluding remark, and I appreciate the organizers of this seminar for hosting this academic interaction, and I hope कि इसकी जो outcome आएगी और जो इसकी आप awareness create करेंगे, जो इस वक्त के decision makers हैं, वो उसको consider करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, Aswar. We cannot wait for another 9 months. We need election. Otherwise, the boat will be missed. This is the message from former Board of Investment Chairman, and he's the president of MAP also. So he's very much in touch with businesses locally and internationally. Now we have the last speaker, and then we will have Chairman PTI Imran Khan. I would like to invite Mr. Matthias. He is a long-term foreign investor in Pakistan. And he has been investing in Pakistan for the last 15 years. So he will going to give us the perspective from outside how the international investors are looking Pakistan at the moment. Over to you, Matthias. Thank you, Musamil. And thank you for inviting me here today. I've been investing in emerging markets for 26 years now. I was lucky enough to be among the handful Swedes that introduced Russian equities to the broader public in the mid-90s. I came across Pakistan in 2005, and just like most other foreign investors at the time, I actually did not think it was investable. But I quickly realized it was a much more developed capital market than many other Asian markets at the time. I traveled to Pakistan the first time in 2008, and I was amazed by the managements I met. Pakistan, in my view, at this time was significantly ahead of Vietnam. So in 2011, I founded Tundra, and we launched the first daily traded Pakistan fund that had been launched for more than a decade. We were lucky with the timing. Between the years 2012 to 2016, our fund was among the top 10 equity funds in Sweden every year. In 2012, for a fact, when foreign portfolio inflows in Pakistan turned positive, it was Swedish retail investors that constituted 2/3 of the net foreign inflow that year. We have a lot to thank Pakistan for. Pakistan allowed us to grow Tundra into a leading frontier markets boutique. Today, we manage one single global strategy where Pakistan is the second largest counterweight. And despite all the problems and disasters of recent years, Pakistan is still the top contributor to our global frontier funds performance. And it's been the major reason why we are today the overall highest ranked fund globally in the frontier category. Between the start of 2009 until late October 2014, Pakistan attracted $1.4 billion in foreign portfolio inflows to its equity market. Since late 2014 and until today, the same investors have sold $2.7 billion worth of Pakistan equity. So what happened? First of all, it's important to understand that Pakistan has not been alone in its suffering. Small emerging markets have generally shown a similar pattern.
With few exceptions, Indonesia and Vietnam are two of them. All markets have seen outflows as foreign investors have focused on opportunities at home, given the very low rate environment. During the last 8 years of outflows, the MSCI Frontier Markets Index, excluding the GCC countries, is down 18% versus Pakistan's 35% in US dollars. A second reason was, of course, that most small emerging markets took a huge hit when COVID came up on the agenda, given that you have limited room to provide support to your populations. And of course, the final hit, and probably most painful one, was the rise in commodity prices and food prices that have been prevalent since the Ukraine-Russia conflict started. That said, although you have a lot of general reasons for why Pakistan has been in trouble, you also have some specific issues. I feel, as a kind of an outsider who has been watching this country for the last 17 years, sometimes I suspect that the fact that Pakistan was one of the first Asian countries that implemented proper judicial and civil servant structures eventually became its curse. Because the same structures that had been built for your people was improperly used by the wrong people, and mismanagement became chronic. As mismanagement and corruption became prevalent, the young people at the time got the wrong role models, and it was allowed to become a normal routine and actually a necessity to succeed. It has not destroyed the country, but it has slowed down your progress significantly. A country, however, is not defined by its leaders, but by its people. We meet so many amazing people when we travel Pakistan, who run successful and honest businesses, and who really want what is best for Pakistan. A key component when we do research is to assess in what way a potential portfolio company benefits society. The reason is very simple, because after corporate governance risk, state governance risk, meaning the risks of sudden changes in regulations, the taxman knocking on your door, is the biggest risk in our markets. So if we invest in companies that help the local community forward, or if I can put it that way, make the politicians look better than they actually are, this risk is significantly reduced. In Pakistan, we find many great companies, but what we want going forward is for these companies to have breathing room to grow. Being a politician does not have to be very hard. You need to set rules that everyone understands and provide a stable playing field so that the great companies can find their way. Pakistan has so many talented people who will then do the job for their leaders. In developed countries, the human capital, which is the net present value of all future salaries, makes up approximately 70% of these countries' wealth. And given Pakistan's huge population base and favorable demographic, it makes sense to put a lot of efforts going forward on education in general and technology in particular. If that happens, Tundra will not have a handful of potential investments, but eventually thousands. When I meet locals, unfortunately, I often meet the perception that Pakistan is somehow doomed. It's forever to be an outcast. And yes, the general perception of Pakistan internationally today is poor. But this has been the case since the late 90s. A majority of the world's investors today still believe Pakistan is uninvestable, and you won't be able to change their minds anytime soon. My recommendation here is to hide that frustration that this fact might inflict, and instead focus on the surprisingly many foreign investors that have a much more balanced view of Pakistan than the common narrative in Western media normally presents. They might not be as loud, but they outnumber the critics. And these investors will return post the current crisis, provided that there is a constructive political environment focusing on the way forward. They will appreciate sensible economic policies you implement, but they will also be concerned if there are signs of confrontation. When we invest, we want to spend 80% of our time on the 20% most important parts. If Pakistan reaches
$3,000 GDP per capita, you will create additional wealth for your country of $500 billion. I would say that that is significantly more than you can ever claw back from historical wrongdoings, and thus, it seems to me, is where you should spend 80% of your time going forward. As politicians, every single constructive measure you implement will take the country one step forward towards a better scenario. So be patient. For someone who launched a fund management company which took a huge bet on Pakistan, you might believe I'm an optimist. In fact, I would say that I'm a very risk-averse and conservative investor. A key strength for me has instead always been about measure opportunities versus current expectations. And expectations on Pakistan at this stage is at an all-time low. What happens during the next 6 months is unknown. But what is sure is that investors expect the worst. So instead of focusing on the negatives in the past, I hope that whichever leadership comes after the election will focus on the way forward. Which path has Pakistan chosen by this time next year? And just to conclude, politicians, you don't have to be flawless. History shows that politicians have plenty of room to make mistakes. If people trust them, they will fill in the gaps for them. And keep in mind the numerous occasions countries have risen from the hardest of crises. My old mentor used to say, every day starts at 100%. And that is the mindset I hope to see from whichever government comes into power after elections. And I think compared to the current situation today, you have absolutely everything to win. Thank you. Thank you very much, Matthias, and thank you for your time. The punchline from Matthias is, next 6 months is unknown, and we have to make sure we should not waste time. My next panelist is none other than Chairman Pakistan PTI, Imran Khan Sahab. Please give him a warm welcome before he addresses. शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं आप सबको, जिस तरह आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की इकोनॉमी की, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, मैं जो इकोनॉमी के हालात हैं, पहले मैं आपको सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे, और जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि पाकिस्तान फंसता इधर आके है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाया। हमारे सामने ईस्ट एशियन टाइगर्स बने, चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए। सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बस्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला 1 साल सर्वाइव किया। और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लायबिलिटीज देने के लिए। तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की, और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई।
تو کورونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے, تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے, جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی, اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے, تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں, اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ. لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے ایک سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا, ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی. تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے, تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے, وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی, نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی, انسینٹیوز لیے. اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اس نے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا, اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی, اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا, انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے, اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں. ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں, کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں, تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کا, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا, اور وہ آگے فیجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا, کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا. اور وہی جو آج ہوا, آج جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے, غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز, جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے
इकॉनमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती, बिजनेसेस हम सब जानते हैं, और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकोनॉमी जहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकोनॉमी के अंदर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस, जो फाइनेंस कम्युनिटी है, वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहली गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है, और वो है इलेक्शंस करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है, और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबका ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा, हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाज़ेह है, चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये उस उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए, और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता, मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी, और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकोनॉमी की अब बात कर रहा हूं। इकोनॉमी जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हर जगह मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। मैं FBR के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाइज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए,
اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے شوکت ترین نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے, وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل FIRs کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو اور الٹی ان کے اوپر FIR کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے CDF بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, PTI میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں, زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں, کہ دیکھیں جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں.
وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. اور یہ نمبر ون چیز ہوگی جو, اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمین ملا ادھر ڈیووس میں, تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ کا 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایک ہمیں سٹیبلٹی چاہیے ہے, ایک گورنمنٹ آئے جو کہ 5 سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ ہو. اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لا, جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کورٹس بھی بنانے پڑیں, لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر, ان کو اسپیشل انسینٹیوائز کریں. جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ اینڈ میں ہم نے کرنے کی کوشش مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹی کبھی دیں تو ایمنسٹی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے. یعنی ہم سارا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں, انڈسٹری میں لگائیں. بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے, ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم, جتنا ٹورزم کے اندر, کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہیں ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہیں ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کوڈ بیکم دا نیکسٹ اسکیئنگ سینٹر ان دا ورلڈ, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ ہے. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے. سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فارن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے,
गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। नाइजीरिया तेल के ऊपर बैठा हुआ है, गुर्बत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नाइजीरिया 7% है। स्विट्जरलैंड विदाउट रिसोर्सेज खुशहाल तबका है क्योंकि 99.9% रूल ऑफ लॉ है। सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज 90% से ज्यादा है। तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है और पाकिस्तान 10% से कम है। तो जब तक ये जो असल इशू है, खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस में साबित हो गया। और मैं भी ये समझता हूं कि हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निजाम। थैंक यू। के बाद आया हुआ था और जो है हमारी हुकूमत उससे फाइट कर रही थी। उस वक्त आपने रिजीम चेंज करके जो है ना कमोडिटी सुपर साइकिल को आप कर सके और ना लोकली चीजें मैनेज कर सके। लेकिन चेयरमैन ने एक पैगाम आप सारों के लिए दे दिया है कि जैसे ही वो आएंगे पाकिस्तान में वो फैसले होंगे जो शायद पाकिस्तान को 75 साल पहले कर दे शायद। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का। और अब हमारी छोटी सी हाई टी है, वहाँ पे आप नेटवर्किंग करें और जो है हाई टी एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।